Hi everyone, welcome back to my channel once again. I hope all of you are doing so great. So last class में we discussed about the human heart, है ना heart blood को कैसे pump करता है. So in today's session we are going to talk about plants कि plant में कैसे transportation होता है. Okay, so let's start today's session without any further delay. So for the transportation, basically in plants, there are two types of transportation, active transport and passive transport. Okay, active transport is the transport which is happening against the concentration gradient. Means the molecules are moving from lower concentration gradient to the higher concentration. तो molecules low to high concentration gradient में move करते हैं किस में एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ठीक है पैसिव ट्रांसपोर्ट में इसका उल्टा होता है द मॉलिक्यूल्स आर मूविंग फ्रॉम हाई टू लोअर concentration gradient ओके सो दिस इज द पैसिव ट्रांसपोर्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है बट पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती ओके इट्स वेरी सिमिलर लाइक अगर हम सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हैं मान लो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है या फिर आपके स्कूल में जो क्लासरूम है आपका फोर्थ फ्लोर में है ना फिफ्थ फ्लोर में तो सीढ़ियों से ऊपर चढ़ोगे तो आपको ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ना बहुत ज्यादा थक जाते हैं बट जब नीचे उतरते हैं तो आराम से नीचे उतर जाते हैं है ना तो जब हाई टू लो आ रहे हैं तो यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं हो रही जब लो टू हाई जा रहे हैं एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही है ठीक है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में there are some carrier proteins also involved which are helping to transport the molecules ठीक है passive transport is further divided into simple and facilitated diffusion simple diffusion and facilitated diffusion passive transport में osmosis भी आ जाता है ठीक है osmosis is also another type of passive transport only तो यहाँ पे मेनली कैरियर प्रोटीन्स की इतनी ज़रूरत नहीं होती ओनली फैसिलिटेड डिफ्यूजन रिक्वायर सम चैनल प्रोटीन्स एंड कैरियर प्रोटीन्स अदरवाइज सिंपल डिफ्यूजन में एंड ऑस्मोसिस में कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती सो यू कैन सी दिस द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट okay so here you can see the active transport is the movement of substances across a biological membrane from lower concentration to the region of high concentration okay whereas in the passive transport the molecules are moving from high to low concentration gradient active transport is a very fast process okay passive transport slowly होता है active transport में cellular energy की requirement होती है ATP energy की requirement होती है passive transport में नहीं होती ठीक है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कौन कौन से मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं बेसिकली जो लार्ज मॉलिक्यूल्स है जैसे कि प्रोटीन्स लिपिड्स ठीक है कोई कॉम्प्लेक्स शुगर्स है दीज आर ट्रांसपोर्टेड वेर एज इन द पैसिव ट्रांसपोर्ट जैसे गैसेस है ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है वाटर लिपिड या फिर कोई हॉर्मोन्स है या फिर मोनोसैकेराइड्स दीज आर ट्रांसपोर्टेड एक्टिव ट्रांसपोर्ट में करियर प्रोटीन होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट डू नॉट रिक्वायर द करियर प्रोटीन एग्जाम्पल हम देख सकते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट का सोडियम पोटेशियम पंप ठीक है एक्सोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस पैसिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल है ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन ठीक है सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बट हमने जैसे ह्यूमन के केस में पढ़ा था कि कोई चीज जब मूव कर रहा है जैसे ब्लड इज मूविंग थ्रू द पाइपलाइंस है ना विच आर द ब्लड वेसल्स तो क्या मुझे ये बताओ इज देयर एनी पाइपलाइन इन प्लांट्स टू क्या प्लांट्स के पास भी कोई ऐसा पाइपलाइन होता है जैसे हमारे पास ब्लड वेसल्स होते हैं so the answer is yes okay plants are having the pipelines which are called as vascular bundles इनको क्या बोलते हैं vascular bundles बोला जाता है okay these are the complex permanent tissues or the vascular bundles xylem and phloem okay so let's see the diagram of the xylem first xylem is consisting of tracheids vessels xylem parenchyma and the xylem fiber so for the xylem fiber look like this
This is the tracheids and this is the vessels. Okay, so mainly tracheids and vessels are helping in the transportation of water and minerals in a unidirectional way. Okay, so water and minerals are moving from root to other parts of the plant because root is the only one which is absorbing the water, correct? So from the root to the in the upward direction in the topmost part of the plant, water and minerals is moving. So it is a unidirectional transport. And while water and mineral is moving, it do not require any energy also. कोई energy ATP energy की requirement नहीं होती xylem में. ठीक है? Phloem देख लेते हैं. Phloem consists of the sieve elements, which is further like sieve element में क्या होता है? Sieve tube होता है, sieve plate होता है. It consists of the companion cells also, phloem fiber, and again phloem parenchyma. ठीक है? तो sieve tube is the one through which the food is transported from one part of the plant to another part of the plant. Okay, and companion cells are also helping the sieve tubes in this process. That's why it is called as companion cells. It is giving the company. Okay, now it is a bidirectional transport. Why? Because food is prepared in the leaves by the process of photosynthesis, है ना? लीव्स में बनते हैं, तो लीव्स से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट में जाते हैं, डिफरेंट ब्रांचेस में जाते हैं, एंड इट इज द एक्सेस फूड इज स्टोर्ड इन द स्टोरेज ऑर्गन्स आल्सो. ठीक है? And when the plant is requiring that food from the storage organ to the other parts of the plant, that food is moving. Okay, so that's why the transportation in the phloem is a bidirectional transport. Okay, but now here it requires ATP energy also for the transportation. I hope it is clear to all of you. Now, the transportation of the food through the phloem has another name which is called as translocation. Okay, transportation of the food through the phloem is called as translocation. All right. Chalo, let's move on now. Let's talk about a very important process in the plant, that is the transpiration. Now, xylem is helping to move the water in an upward direction, right? So, this movement of water in the upward direction is called as the ascent of sap. Okay. Now, transpiration एक process होता है. So, plant is absorbing the water continuously from the root, correct? Now the excess water, अब सारा water plant utilize नहीं करता, थोड़ा बहुत वाटर, ओनली 2% वाटर प्लांट यूटिलाइज करता है, 98% इट रिलीज. ठीक है? now this excess water escapes out in the form of water vapor through the stomata, and this process is called as transpiration. So here you can see root is absorbing the water, water is moving through the stem, okay, through the xylem, and then when it reaches the leaves, it is evaporated out, and this process is called as transpiration. So stomata opens and close, correct? So when the stomata is open, the water in the form of water vapor evaporates out. Okay, so now when the water is moving out, it is creating a pressure, or it is creating a pull, and that force is called as the transpirational pull. ठीक है? तो मेनली देखो, movement of water through the xylem, it is called as ascent of sap. बट पानी मूव कर कैसे रहा है, कंटिन्यूअसली मूव कैसे कर रहा है? जैसे हमारे पास तो क्या है, पंप है, हार्ट है ना, हार्ट इज द पंप. तो हार्ट इज पंपिंग द ब्लड एंड ब्लड इज फ्लोइंग, करेक्ट? हमने पढ़ा था लास्ट सेशन में. बट प्लांट में कौन सा पंप है? प्लांट में भी तो कोई तो फोर्स होना चाहिए ना कि पानी मूव करता रहे कंटिन्यूअसली, correct? So what are the force which is required for the ascent of sap? So let's see this. First is the transpirational pull. When the transpiration is happening, the water is evaporating out, so it is also pulling the water in an upward direction. Okay, so it is creating a negative pressure or tension in the xylem which draws more water in the upward direction. Okay, that is the transpirational pull.
अब वाटर के पास एक और फोर्स होता है, दैट इज द adhesive and cohesive force. Now what is this? Now the force between the water molecule is the कोहेसिव फोर्स. एक वाटर मॉलिक्यूल के और दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के बीच में भी एक फोर्स होता है, वो एक दूसरे को पुल करते हैं, ठीक है. दैट इज द कोहेसिव फोर्स. एंड देयर इज एडहेसिव फोर्स विच इज बिटवीन द सेल वॉल एंड द वाटर मॉलिक्यूल. ओके, तो जाइलम वेसल का जो वॉल है और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में एक फोर्स है, जिसकी वजह से वाटर जो सेल में है वो मेंटेन रहता है. ओके, इट इज हेल्प द मेंटेन वाटर कॉलम्स इंटीग्रिटी एंड एनेबल इट टू पुल इन द अपवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, वो ऊपर की तरफ जा रहा है वाटर, ऐसा नहीं कि नीचे गिर गया. तो वो उसी में फंसा हुआ है, इसी इसी सेल में. सो दैट इज द एडहेसिव एंड कोहेसिव फोर्स. Next type of force which is responsible for ascent of sap is the root pressure. Now root pressure is like root is absorbing the water continuously, correct? It is absorbing water and minerals. So these solutes accumulate in the root cells and they create a positive pressure. जैसे जैसे वो एब्जॉर्ब कर रहा है, तो रूट के सेल्स में भी एक प्रेशर हो रहा है कि वो और पुश होके वाटर ऊपर की तरफ जाए. Okay, so it is pushing the water into the xylem vessels. Okay, so that is the root pressure. Now next is the capillarity, because xylem vessels and tracheids both are like very capillary, है ना? It's very thin. So due to the capillarity action also, it is moving in a upward direction. All right, so it is the ability of water to move upward in the narrow tube. So vessels and tracheids are very narrow. So it is moving in the upward direction. तो इस तरह से पानी जो है ऊपर की तरफ मूव करता है, ठीक है. सो दिस इज अबाउट द जाइलम फ्लो एंड फ्लोएम. ओके, सो दिस इज हाउ दैट वाटर इज गेटिंग ट्रांसपोर्टेड. चलो लेट्स डिस्कस अबाउट दैट हाउ डू द प्लांट इज रिलीजिंग द वेस्ट प्रोडक्ट. प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट्स को कैसे रिलीज करता है? क्या उसके पास कोई एक्सक्रीटरी ऑर्गन है या नहीं है? सो लेट्स सी दिस. ओके, ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, सो आई एम कवरिंग दिस इन दिस वीडियो ओनली. सो एक्सक्रीशन इन द प्लांट्स. सो सी, प्लांट एक तो हमने पढ़ा क्या अभी, ट्रांसपिरेशन. ओके, ट्रांसपिरेशन एंड द गटेशन is the process by which plant is releasing its excess water. ठीक है, ट्रांसपिरेशन तो हमने अभी पढ़ लिया कि क्या होता है, excess water release होता है. now what is this guttation? तो गटेशन प्लांट्स में तब होता है व्हेन there is high humidity in the atmosphere. All right, so when there is high humidity in the atmosphere, transpiration rate slows down. Okay, transpiration rate of transpiration decreases. So in that case, water is not able to evaporate, है ना? तो अब पानी जाएगा कहाँ, excess water कहाँ जाएगा? तो excess water कैसे रहता है? देखो plants के ऐसे leaves में ऐसे ऊपर आ जाता है, ठीक है, ऐसे जैसे ओस की बूंद की तरह ऐसे निकलने लगेगा. ठीक है, ये प्रोसेस हम ऐसे ग्रासेस में भी देख सकते हैं कि उसमें ऐसे बूंद की तरह ऐसे निकलने लगता है. दैट इज द गटेशन प्रोसेस. ओके, तो बाय दिस प्रोसेस इट इज लाइक it is removing the excess water. Okay, now वाटर का तो हो गया, बाकी चीजें कैसे जाएंगी? जैसे सॉलिड वेस्ट है, अब ये स्टोर हो जाते हैं जो लीव्स एजिंग होने लग जाएगी जिन लीव्स की, ठीक है, द लीव्स विच आर हैविंग द एजिंग द तो जो लीव्स शेड होने वाले हैं, सॉलिड वेस्ट जो है वहां पे स्टोर हो जाते हैं. एंड दोज वेस्ट आर रिमूव्ड व्हेन द लीव्स आर falling off. Okay, in the falling of fruits also, peeling of the bark also, the waste materials are stored. Okay, and in the form of gums and raisins also, the gums and raisins which we use for making the rubber or the latex, these are also the excretory products of the plant. All right, so that's how plant is doing the excretion. Now some amount of salt is also removed, excess salt and solid waste are removed directly into the soil. Okay, so soil like through the roots directly into the soil में भी remove कर देता है plants. So this is the excretion and transportation in the plants. So today we have covered these topics. Okay, I hope it is clear to all of you.
Now, if you want to know about how human do excretion, so please do watch my next video. Okay, till then, take care. Have a nice day, all of you.